हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शुभ ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकेन के डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंस क्या है? सी दिस आर सिमिलर टर्म्स है दोनों भी, राइट? प्रोटियोग्लाइकेन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, बट इसमें डिफरेंस है। हाँ, एंड दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोअर स्टैंडर्ड मतलब बहुत पहले से हम पढ़ते हैं प्रोटियोग्लाइकेन ग्लाइकोप्रोटीन, बट वी स्टिल कंफ्यूज, राइट? एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल मेक द टू थिंग्स क्लियर टू यू, राइट? कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो बेसिकली दोनों में क्या सिमिलर है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, दिस इज सिमिलर इन बोथ ऑफ द थिंग्स। ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकेन दोनों में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, ओके, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, राइट? So now first of all we will see glycoprotein. Glycoprotein जो नेक्स्ट चीज है दैट इज प्रोटीन। ओके, तो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट इन हायर अमाउंट्स देन कार्बोहाइड्रेट। ओके, इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट ज्यादा होते हैं, मोर इन नंबर देन कार्बोहाइड्रेट्स, एंड बेसिकली दीज आर नॉन रिपीटिंग यूनिट्स of carbohydrate. Okay, non-repeating units of carbohydrate present होते हैं. These are short, okay, short chain, right? And ये present कहाँ पे है? Cell membrane. Basically integral protein. Okay, function cell signaling, right? Two types है, N-linked and O-linked. Okay, and example collagen, right? Transferrin. These are the examples, etc. Okay, now proteoglycan. प्रोटियोग्लाइकेन, इसमें ग्लाइकेन्स है नेक्स्ट, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर इन नंबर, तो कार्बोहाइड्रेट है शुगर्स है हायर है देन द प्रोटीन्स, ओके, एंड दिस आर बेसिकली रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली इसे हम ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेंस कहते हैं, GAG, राइट? Now these are basically present in connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, रोल इज प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ओके, एक साइटोस्केलेटन मेंटेन करना रोल है, राइट? फंक्शन फॉर सपोर्ट, ओके, एंड हियर एग्जांपल्स आर chondroitin sulfate, heparin sulfate, okay, keratin sulfate, etc. And basically these are long chain,
long chain, right? So this is a difference between proteoglycan and glycoprotein. Okay, I hope that this will make clear, and I think that this is very important. Basically, proteoglycan and glycoprotein बहुत important है while we are studying cell biology, right? So that's it for this video. I hope that the video was helpful. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.